Okay, dear friends, it's lecture time now. If you remember in our earlier lecture, we were discussing indifference curve analysis. We had described indifference curve where very specifically I have described the concept called as scale of preference. ने स्केल ऑफ प्रेफरेंस को डिस्क्राइब किया था और उसमें मैंने बताया था that scale of preference is a logical arrangement of various combinations as per the level of satisfaction. And उसके बाद में हमने डिस्क्राइब किया था indifferent schedule. I said indifferent schedule is the schedule of various combinations which will provide equal level of satisfaction to the consumers. Equal level of satisfaction to the consumers. और उस indifferent schedule पे से हमने indifference कर्व बनाया था. And indifference कर्व के बाद में मैंने आपको indifference map. Have we described that indifference map? Indifference map हमने describe किया था. Okay. So in our today's lecture, I am going to describe the concept called as properties of indifference curve. अभी से मैं indifference curve को IC बोलूँगा. IC indifference curve analysis. IC analysis. Now there are various properties. Those properties, some people also call them as features. So you can call them properties or you can call them features. They are one and the same. So very first feature or very first property of an indifference curve is IC slopes downwards from left to right. लास्ट टाइम में एक इंडिफरेंस कर्व का डायग्राम बनाया था. उस डायग्राम में हमने स्टडी किया था कमोडिटी एक्स कमोडिटी वाई. वहां पे हमने कर्व जब डायग्राम बनाया था, वी गॉट एन इंडिफरेंस कर्व व्हिच वाज स्लोपिंग downwards from left to right. That curve was sloping downwards from left to right. It will always slope downward from left to right. क्योंकि मैंने आपको वहां पे सपोज एग्जांपल बताया था
से सब्जी रोटी, एंड कमोडिटी वाई बोल दिया मतलब दाल राइस। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम दाल राइस ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो सब्जी रोटी का कंजम्पशन कम हो जाएगा, और वैसे ही अगर दाल राइस कम कंज्यूम किया तो सब्जी रोटी ज्यादा खाएंगे। मतलब एक प्रोडक्ट का कंजम्पशन अगर बढ़ेगा तो दूसरे प्रोडक्ट का कंजम्पशन कम होता है। So this is a clear explanation that it will always slope downward from left to right, which is clearly indicating that as consumption of one commodity rises, as consumption of one commodity rises or increases, the consumption of another commodity reduces. The consumption of another commodity reduces, and thus it will always slope downward from left to right. Is that clear to all of you? Is that clear to all of you? Okay. Now we go to the second property of indifference curve. Second property of indifference curve, IC will always be convex to origin. IC will always be convex to origin. Abhi, this point says that your indifference curve indifference curve हमेशा convex रहेगा. This is correct. It can never be concave. Wrong. Indifference curve will always be convex to the origin. It will never be concave. It will always be convex to the origin. अभी ये ऐसा क्यों होता है? Why it always becomes convex to the origin and not concave? इसके पीछे एक लॉजिक है called as marginal rate of substitution. इसके पीछे एक लॉजिक है, marginal rate of substitution. I would call it as, अभी से मैं इसको MRS बोलूंगा, marginal rate of substitution. अगर मैं ऐसे लिखता हूं MRS XY, that means marginal rate of substitution of
commodity X for commodity Y. Marginal rate of substitution of commodity X for commodity Y. It will always be equal to MUX upon MUY. That is marginal utility of X upon marginal utility of Y. अभी इसका मतलब क्या होता है? Marginal rate of substitution is the rate at which a consumer is prepared to exchange one commodity for another. Abhi, when I am ready to exchange one commodity for another, अभी जैसे क्या होता है? Suppose आपको दाल राइस बहुत पसंद है, मैंने आपको लंच में दाल राइस दिया, उसके बाद मैंने आपको डिनर में भी दे दिया, उसके बाद में मैंने आपको वापस से लंच में भी दे दिया, नेक्स्ट डे वापस से डिनर में दाल राइस ही दिया. You will not like that. फिर उसके बदले में आपको नेक्स्ट डे डिनर में मैं अगर सब ऑप्शन देता हूँ, दाल राइस लो या सब्जी रोटी, डेफिनेटली प्रेफर टू कंज्यूम sabji roti rather than dal rice, because we need to, हमारे लिए वो एक बार बार दाल राइस खाना, मतलब उसका यूटिलिटी अपने लिए क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. The utility goes on decrease, and that is why we will exchange more dal rice for sabji roti. अभी इसको मैं एक एग्जांपल के साथ में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, so that you can understand it better. You will understand it better with the help of example. मैंने आपको यूटिलिटी शेड्यूल, सॉरी यूटिलिटी नहीं, इंडिफरेंस शेड्यूल बताया था. मैंने बताया था कॉम्बिनेशन commodity X, commodity Y. A, B, C, D. ये टेबल हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ. इफ यू रिमेंबर कमोडिटी X 1, 2, 3, 4. कमोडिटी Y 12, 6, 4, 3. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी.
तो यहाँ पे हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालेंगे। देखो फर्स्ट में कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है, डैश। अभी सेकेंड में जब x का एक यूनिट बढ़ाया, आई हैव इंक्रीज्ड 1 यूनिट ऑफ x, मैंने y का कितना सब्स्टिट्यूट किया, 6, so this is marginal rate of substitution। एक यूनिट x के लिए मैंने 6 यूनिट्स y के दे दिए, एक यूनिट x के लिए मैंने 6 यूनिट्स y के दे दिए, दैट इज माय सब्स्टिट्यूशन। आगे देखो वापस से, व्हेन सेकेंड फ्लोर, अभी मैं एक और यूनिट बढ़ा दिया x का, 2 से 3 कर दिया, तो मैंने 6 पे से 4 कर दिया। नाउ हाउ मेनी यूनिट्स आई हैव सब्स्टिट्यूटेड, 2, 3 से 4 किया तो 4 से 3 हो गया 1। तो आप ऑब्जर्व करो, जब भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, it goes on decreasing, and as marginal rate of substitution goes on decreasing, we can see that your indifference curve will always be convex to the origin. Let me discuss it again with help of diagram. X axis, Y axis, origin, commodity X, commodity Y, 1, 2, 3, 4. Two, 4, 6, 8, 10, 12. So when unit was 1, x का 1 था, y was, x का 1 था, y was 12. We get 1 point. Let us call it as combination A. x का 2 हो गया, y was 6. Combination B. x का 3 हो गया, y was 4. And 4, 3. को चारों कॉम्बिनेशंस का प्लॉटिंग मिला। नाउ लेट अस जॉइन ऑल दोस पॉइंट्स। When we join all those points, if you remember, हमको इंडिफरेंस को मिलता है। अभी आप ऑब्जर्व करना यहाँ पे, you see this marginal rate of substitution, मैं यहाँ पे उसको हाईलाइट कर रहा हूँ।
जो रेड लाइन है, it is the rate of substitution. This rate of substitution goes on decreasing. It goes on diminishing. And therefore, your indifference curve is convex. अगर ये ऐसे हो जाएगा, terms you can see that it goes on, this red line will go on increasing, which is wrong, because more we get, less we want. So concave कभी भी नहीं रहेगा, it will always be convex to the origin. Is that second feature clear to all of you? Is that second feature clear to all of you? Now we go to the third feature. The third feature, or we can say the third property. Just hold on for a moment. Friends, a distance पे खड़े रहो. ऐसी दलित के बाद में मिला है तो दलित में मिलते रहो. But very rare, it is not yet safe. 200 cases per day. थोड़ा safe distance maintain करो. Stationary लेना है. ना दूर खड़ी रहना थोड़ी. 1 meter. So can anybody tell me why does an indifference curve slope downwards from left to right? Sorry, why does it is convex to origin? Can anybody tell me? Very good, Tejal, because the marginal rate of substitution goes on decreasing, it goes on diminishing, and therefore we can see that your indifference curve will always be convex to the origin and not concave. Indifference curve will always be convex to the origin and not concave. Third feature, an IC towards right indicate higher satisfaction and vice versa. Towards the right, हमने ये कंसेप्ट भी ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, that when we prepare an indifference map, IC, IC1, IC2, तो अभी
ये IC2 लेते हैं। IC के राइट हैंड साइड में अगर वो शिफ्ट हो जाता है IC, then it will have higher satisfaction. मतलब in this particular diagram, IC2 will have highest level of satisfaction. And when indifference curve is on the left hand side, it will have lower level of satisfaction. An indifference curve towards right hand side will have higher satisfaction, towards left hand side will have lower satisfaction. Fourth property, no two IC will intersect each other. No two IC, that is indifference curves, can intersect each other. No two IC can intersect each other. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। वापस से let us discuss it with help of one diagram.